Dear students, our next topic is power of a lens. Power of a lens. Okay? So let us first of all discuss what does a power of a lens means. Okay, power of a lens means it is the measure of degree of divergence or convergence of a, a beam of light of a beam of light falling on it, falling on it। इसका मतलब आपके पास एक लेंस है, इस लेंस में एक बीम ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक किया, उसके बाद आपकी जो लेंस है, इफ इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो लेंस उस बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराएंगे। इफ इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, देन वो लेंस उस बीम को कन्वर्ज कराएंगे। ओके, नाउ लेट थीटा बी द एंगल। ओके फाइन। नाउ कितना डिग्री उसको डाइवर्ज कराया या कितना डिग्री उसको कन्वर्ज कराया, उसका जो मेजरमेंट है, दैट इज व्हाट पावर ऑफ लेंस सेज। ओके, अब एक एग्जांपल देखिए। लेट दिस बी ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड let this be a ray of light moving parallel to the principal axis। वो कन्वर्ज होके इधर से पास हो। आप जानते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या होना चाहिए, ये इसका फोकस होना चाहिए। सो लेट दिस बी लेंस नंबर 1। सो आई एम मार्किंग दिस as f1 and let this distance be marked as say small letter f1। इस डिस्टेंस को स्मॉल लेटर f1 मार्क किया। नाउ ये देखिए, this is the angle through which the ray got converged। Let this angle be theta 1। All right, now let me consider another lens। Okay, let this be another lens। ये इसका principal axis हो गया। Now let this be another beam of light moving parallel to the principal axis। और ये देखिए, ये इधर से पास हो रहा है। Okay fine, this is lens number 2। fine, so इसके वजह से ये हो गया f2 और ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस आपका मार्क कर सकते हैं स्मॉल लेटर f2। ओके, नाउ इधर देखो, जो एंगल है, जिस एंगल के थ्रू इधर बीम ऑफ लाइट जो कन्वर्ज हुआ है, लेट दिस एंगल बी थीटा 2। ऑलराइट, नाउ आप देखिए, इट्स वेरी क्लियर, थीटा 2 का जो वैल्यू है that is greater than theta 1, isn't it? But f2 का जो वैल्यू है that is less than f1। I repeat, theta 2 is greater than theta 1 but f2 is less than f1। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा smaller the focal length, smaller the focal length, ठीक है, जैसे focal length small होते जाएंगे, smaller the focal length, greater is its capability to diverge or converge the ray। okay, greater the capability of diverging or converging, greater the capability of diverging or converging, यानी कि smaller the focal length, greater the power। smaller the focal length, ठीक है, smaller the focal length,
greater the power of a lens, greater the power of a lens. ठीक है? Now let us discuss how to define power of lens. Define power of a lens. Okay, now how we define it? सबसे पहले मैं आपको definition बता देता हूँ. It is defined as the tangent of the angle by which a lens converge or diverge a beam of light falling at a unit distance from its optical center. So this is what the definition of power of lens. I repeat, it is the tangent of the angle by which a lens converges or diverges a beam of light falling at a unit distance from its optical center. इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए, let this be convex lens. ये आप अपने convex lens कंसिडर करिए, ठीक है. Let this be the principal axis, ठीक है. Now आपके पास एक beam of light है, से देखिए ऐसे आके स्ट्राइक किया और ये इधर से कन्वर्ज होके इधर से पास हो. सो ये आपका फोकल लेंथ है, आप जानते हैं. सो इट वाज supposed to travel in this direction, so you can say this is the angle through which it got converged. So ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो जाएंगे. ओके, इस पॉइंट को आप O कंसिडर करिए. ओके, इसको आप mark it as M and this is F. All right, now from triangle MOF, you know that MO upon OF equal to tan of delta होगा. फाइन, MO को आप स्मॉल लेटर h कंसिडर करिए एंड दिस वाज F फोकल लेंथ, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा, tan of delta equals to h by f हो जाएंगे, isn't it? Now h का जो वैल्यू है आप अज्यूम करिए, लेट h इक्वल टू 1 मीटर नहीं 1, क्योंकि सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर हम लेंगे, मीटर में तो मीटर में लेंगे. दैट्स व्हाई मैंने अभी h इक्वल टू 1 पुट किया हुआ है. आई मीन टू से इफ h is measured in centimeter, comma we will measure f also in centimeter. That's why I'm saying it's a unit reading only. All right, so उस कंडीशन में tan of delta का वैल्यू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 1 हो गया, 1 by f हो जाएंगे. Is that clear? And what is this tan of delta when h equal to 1? This is known as power of lens P. Okay, so power of lens P, इसमें से हम ये कह सकते हैं power of lens P that is reciprocal of its focal length.
It's reciprocal of its focal length. Is that clear? Okay. Now next हम डिस्कस करेंगे about the SI unit of power of a lens. Power of a lens. ठीक है. The SI unit of power of lens is diopter. Okay, इसको represent करते हैं using capital D. Okay, हमें पता है for a convex lens, हम एक convex lens की बात करें, इसका focal length क्या होता है? पॉजिटिव होता है. ओके, इसकी वजह से इसका पावर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. एंड इफ वी कम टू द केस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, if we come to the case of a concave lens, we know that उसका focal length f क्या होता है? That is negative. इसकी वजह से इसका पावर क्या होगा? Power is also going to be negative. Okay, so what we discussed under this topic is power of convex lens क्या होगा? पॉजिटिव होगा. एंड पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा. ऑलराइट, नाउ हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिस्कस कर चुका है, राइट? लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहते हैं? फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला we know that 1 by f equals mu2 by mu1 minus of 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, isn't it? और हमें ये भी पता है p equal to 1 by f होते हैं. So therefore with the help of lens maker's formula we can have the mathematical expression for power of lens p in terms of refractive index and radius of curvature as p equals mu2 upon mu1 minus of 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, where this is mu2 refractive index of the lens, medium by which the lens is made. Here it is mu1 surrounding medium's refractive index. Here this is the first surface, so r1 stands for the radius of curvature of the first surface, and here this is the second one, r2, provided light traveling from here to here. Alright, I hope you got it. It is the first lecture of power of lens. Dear students, our next topic is combination of thin lenses. Combination of thin lenses. So in this topic, let us first of all discuss about the purpose of combination. Purpose of combination. ओके, यानी कि हमें लेंसेस का कॉम्बिनेशन क्यों करना है. ऑलराइट, सो जो लेंसेस का जो कॉम्बिनेशन जो कराते हैं, इट इज फॉर magnification of image, or you can say to magnify the image. All right, second purpose is to increase the sharpness of image, all right. Next you can say to erect
final image formed, erect the final image formed. I mean to say, नॉर्मली आप जानते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारा जो इमेजेस जो बनते हैं कैसे बनते हैं, इरेक्ट है ना, इन्वर्टेड बनते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इरेक्ट कराना है। सो हम क्या करेंगे, एक और लेंस का हेल्प लेंगे सो दैट द इमेज कैन बी इरेक्ट वन। ऑलराइट, एंड लास्ट, to increase the field of view, to increase the field of view। field of view मतलब कितना एरिया को कवर कर पा रहा है ना, देख कितना एरिया को एक पर्टिकुलर लेंस कवर कर रहा है। इट मींस एक गिवन एरिया है, उसका इमेज हमारे पास दे रहे हैं। सो वो एरिया बढ़ाने के लिए, सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू कॉल एज इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू। ओके, सो टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू आल्सो we can have combination of lenses। all right, now अब आप देखिए, let us consider a situation where we are having three lenses, say L1, L2 and L3। हमारे पास three lenses है। okay, so let us place it like this, L1, L2 and L3। ठीक है, this is L1, this is L2 and L3। okay, so let the image formed by L1 be I1, image formed by L2 be I2 and image formed by L3 is I3। so this is the final image form, isn't it? This is the final image। आप एग्री कर रहा है? now let O be the object। so O का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? I बन गया। So O was the object and I was the first image formed by lens number 1। now I1 will act as what? O2, that is object to lens number 2। अब I2 जो होगा that will again do, that will be magnified with respect to I1, है ना, because I1 जो है L2 का ऑब्जेक्ट है। अब L2 क्या करेंगे, I1 को मैग्नीफाई करेंगे। समझ में आया? नाउ I2 जो है that is O3, बोले तो ऑब्जेक्ट टू लेंस नंबर 3। अब I3 जो होगा, I3 that will be again magnified with respect to I2 का कंपैरिजन में I3 का जो मैग्निफिकेशन होगा अगेन ज्यादा होगा। ऑलराइट, नाउ ये जो लेंस है L1, इसका मैग्नीफाइंग पावर आप कंसीडर करिए M1, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आप M2 कंसीडर करिए, अब इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो आप M3 करिए। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी क्लियर। M1 का इमेज को, L1 का इमेज को L2 ने मैग्नीफाई किया, L2 का इमेज को L3 ने मैग्नीफाई किया। सो अब आपका जो टोटल मैग्निफिकेशन जो हो गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट सी स्मॉल लेटर m, that will be M1 multiplied by M2 multiplied by M3 होंगे। So this is what happens to the magnifying power of a lens, magnifying power if you are having combination of three lenses। And you just consider a possibility where you are having small letter n number of lenses, then the magnifying power m will be equal to M1 multiplied by M2 multiplied by M3 multiplied by etc up to क्या जाएंगे, Mn तक जाएंगे। Okay, so this is what happens to the magnifying capability once we are having combination of lenses। all right, now let us discuss about the equivalent lens। equivalent lens। सो मैं बड़ा सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, लेट दिस बी a lens, convex lens L1,
और इस बिल्कुल अटैच करके एक और कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, लेट दैट बी L2। ओके, अब आप देखिए इधर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, फाइन, इससे दो रे निकल रहा है, एक ऐसे। अब आप पता है अगर ये लेंस इधर नहीं होते तो बिल्कुल ऐसे चले जाते। अब ये लेंस इधर होने की वजह से और कन्वर्ज हो जाएंगे और फाइनल इमेज बन गया इधर आई। क्योंकि आप देख सकते हैं आप ऐसे एक रे क्रिएट करेंगे, so these two rays are going to meet at this particular point, so here this is the final image form. All right, now let this be principal axis for another lens, and here I would like to name this lens as L. On the same point I kept the object at the same distance only. Okay, and it was observed that the image formed by this lens is exactly at the same point where the image was formed by the combination of above two lenses. देखिए, all right, ऐसे, ठीक है, this is the image and here was the object. अब आप देखिए L1 और L2 का जो कॉम्बिनेशन किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया at I. Now I have got another lens L जो सेम ऑब्जेक्ट का सेम इमेज सेम पॉइंट पे बनाया. All right, now I can say that capital L is the equivalent of combination of L1 and L2 when kept close to each other. Kept close to each other. समझाया इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है? ओके, फाइन. नाउ अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. देखिए, आई एम गोइंग टू क्रिएट द डायग्राम once again. Lens number 1, okay, lens number 2, fine. Here is, sorry, let this be the principal axis. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. देखिए ये पहला रे and it should have formed the image here अगर दूसरा लेंस नहीं होते तो. ऑलराइट, सो इसको मैं नाम देना चाहूंगा I डैश, बट इधर से ऐसे कन्वर्ज होके इधर इमेज बनाया. सो हियर दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड. ओके, एंड ये आपका दूसरा रे है. देखिए ये दूसरा रे, ठीक है. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज एंड ऑब्जेक्ट हो गया. नाउ इधर से लेकर के इधर तक का जो डिस्टेंस है, कैन मार्क इट एज u. So this is u, and this distance we are marking it as v, and this distance we are marking it as v dash. ठीक है, फाइन. नाउ हमारा जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट लेंस का भी तो हमें बनाना पड़ेगा, राइट. सो लेट दिस बी द इक्विवेलेंट लेंस. सॉरी, okay, so here this is the ray and final image is formed here. ये दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ विदाउट एनी डिविएशन. ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस L, focal length f1, distance is u, and image distance is v.
इस लेंस का फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2. Okay, now what we are going to do is, आप पहले let us divide this into two part. आप इधर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए. लेंस फॉर्मूला का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. This is the general expression. इसलिए हम इसको अलग मार कर रहा हूँ. जनरल एक्सप्रेशन है. ओके, नाउ लेंस नंबर 1 के लिए आप अप्लाई करिए. ये क्या हो जाएगा? 1 by लेंस नंबर 1 का इमेज डिस्टेंस v डैश टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव माइनस ऑफ 1 by u, ऑलराइट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 by f हो जाएगा, 1 by f1. ठीक है, सो हमने कुछ नहीं किया, v u f को उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस किया. कोई साइन कन्वेंशन वगैरह नहीं है. आई थिंक मैंने एक बार बीच में नेगेटिव वगैरह बोल दिया था, प्लीज इग्नोर दैट. ओके, जस्ट रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया. ऑलराइट, नाउ अब आप लेंस नंबर 2 पे आइए. लेंस नंबर 2 में व्हाट हैपेंड इज इमेज डिस्टेंस क्या है? 1 by v है. ऑलराइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 1 upon v डैश. बिकॉज लेंस 2 के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1, आई रिपीट, लेंस 2 के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1 इज द ऑब्जेक्ट. सो u का जगह v डैश हो जाएंगे, इक्वल टू 1 by f2. So let this be equation number 1 and let this be equation number 2. ठीक है, अब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे. ऐड करते वक्त आपको पता है v डैश एक जगह पॉजिटिव है, v डैश दूसरी जगह नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे. So what you will get? You will get it as 1 by v minus 1 by u equals 1 upon f1 plus 1 upon f2. Let this be equation number 3. अब आप इधर आइए, हमारा जो इक्विवेलेंट लेंस है, इधर आप लेंस फॉर्मूला में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर दो. 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f है. Let this be equation number 4. Equation number 4. Now you can see that equation number 4 and equation number 3 has got the same values on the left hand side, which means we can equate values on right hand side. That is 1 by f equals to 1 by f1 plus 1 by f2. Okay, ये हो गया equivalent focal length. So once we got the value of equivalent focal length, what about the equivalent power? 1 by f can be written as p, 1 by f1 can be written as p1, and 1 by f2 can be written as p2. So the equivalent power p is equal to p1 plus p2. Alright, now अगर मान के चलो आपका लेंस जो है, if it is not kept close to each other, like if it is kept at a small distance of separation, say d. So here this is lens L1, here this is lens L2, इसका focal length f1, इसका focal length f2. Okay, now in this case इसका derivation हमें नहीं चाहिए. In this case equivalent focal length 1 by f will be equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus of distance of separation d into f1 f2 होगा. And in terms of power आप लिखना चाहते हैं, then 1 by f is equal to p, that is equal to p1 plus p2 minus of d into p1 p2. Clear? So that was about combination of lenses.